This is the new Redmi Note 8 Pro और इस फ़ोन की प्राइस है अराउंड 40,000 रुपीज़। अगर आप ये फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो आई सजेस्ट कि आप mistore.pk पे जाएं, द ऑफिशियल Xiaomi पार्टनर इन पाकिस्तान। ओके, सो बिफोर वी टॉक अबाउट दिस फ़ोन आई वांट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्रेस द लाइक बटन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द Redmi Note 8 Pro। बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो मैंने सिंपल Redmi Note 8 को pretty much प्रेस किया था फॉर इट्स ऑसम बिल्ड क्वालिटी, और इस फ़ोन के अंदर भी सेम मटेरियल्स हैं लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी उससे बेहतर है। जो इसका फ्रंट और बैक पैनल है दोनों ग्लास के हैं और इट्स गोरिल्ला ग्लास 5, लेकिन अनलाइक द Note 8 द साइड्स आर स्लाइटली कर्व्ड एट द बैक, जिससे फ़ोन जो है थोड़ा सा मोर सीमलेस लगता है बिटवीन द ग्लास एंड द मेटल फ्रेम। Holding the phone feels incredibly premium. It's right on par with other flagship phones. उसकी वजह ये है कि they're using very high quality materials in this phone. I think the back panel of this phone does look really awesome. मेरे पास black variant है, लेकिन I think it will look even more eye-catching in white. मेरी opinion के अंदर जो इसका front panel है that also looks really great. It's a 6.53 inches display और जो इसके bezels हैं वो Note 8 से छोटे हैं. There is a tiny chin on the bottom and a curved notch on the top. Overall, I think the phone looks really amazing. ये super high quality materials का बना हुआ है, it feels really premium and it has plenty of heft, so you feel like you're holding something of very high quality. बिल्कुल Note 8 की तरह इसकी build quality से मैं completely satisfied हूँ। और अगर आप भी मेरी तरह के हैं जो कि aesthetics और फ़ोन की look का बड़ा ध्यान रखता है, तो I think you will be also very satisfied with this phone. When it comes to the performance, this phone has a MediaTek G90T, और जब मुझे ये पता चला कि इस फ़ोन के अंदर एक MediaTek प्रोसेसर है तो I was a bit surprised, क्योंकि Redmi सीरीज़ के अंदर नॉर्मली Snapdragon प्रोसेसर्स होते हैं, लेकिन जो इस प्रोसेसर की बात है वो ये है कि this is not the same MediaTek as before. This year I extensively used the Vivo V15 जिसके अंदर MediaTek P70 प्रोसेसर था, and it was apparent कि MediaTek ने अपनी गेम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है. And this is true in this phone as well. I have absolutely zero complaints with the MediaTek G90T and the performance of this phone. It performs exactly like a flagship phone. It's amazing. जो इसके benchmarks हैं, they put it right up to Snapdragon 845. And the usability में ये काफ़ी feel होता है. I face zero lag in the phone. It's just so smooth. Going through the UI feels great and it handles every app, even graphically intensive apps, perfectly. आप ये फ़ोन 6 या 8 GB वेरिएंट के अंदर ले सकते हैं and it has Android 9 और MIUI 11. I'm very picky and critical about Android skins, लेकिन MIUI 11 gives me all the features that I want in a phone. Features like gesture navigation is amazing on the phone, and because the phone is so smooth, you get such a fluid experience. इसके अलावा इसके अंदर system wide dark mode भी है, which I love. And MIUI 11 overall is so well designed. The icons and the entire UI look so clean and clear and it's really good. Although one problem जो मेरी इसके साथ है वो ये है कि इसके लॉन्चर के अंदर ऐप ड्रॉअर नहीं है, और यूजुअली अगर आप अपने फ़ोन का लॉन्चर चेंज करते हो तो आप गेस्चर नेविगेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इस फ़ोन के अंदर आप पोको लॉन्चर डाउनलोड कर सकते हो जिसके साथ आपको ऐप ड्रॉअर भी मिलता है और आप गेस्चर नेविगेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो. सो इफ़ यू वांट एन ऐप ड्रॉअर, गेट द पोको लॉन्चर. लास्टली इस फ़ोन के अंदर लिक्विड कूलिंग भी है, सो दिस इज़ प्रीटी मच द परफेक्ट फ़ोन टू गेट अगर आप हैवी गेम्स खेलना चाहते हो. यू नो, गेम्स लाइक PUBG आप इसके ऊपर फुल हाई सेटिंग्स के ऊपर खेल सकते हो विदाउट एनी लैग, एंड दैट्स रियली ग्रेट कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ दिस फ़ोन. ओवरऑल इस फ़ोन की परफॉर्मेंस जो है इट इज़ वेरी अमेजिंग. इट्स ऑन पार विद फ्लैगशिप फ़ोन्स जो कि इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, एंड द फ़ोन गिव्स अ वेरी स्मूथ एंड फ्लूइड एक्सपीरियंस. बेशक आप ऐप्स खोलो या बेशक आप हैवी गेमिंग करो या फिर यू नो नॉर्मल एवरीडे स्टफ, it's all fine. It handles it all perfectly. When it comes to the camera, there's a quad camera setup on the back. इसके अंदर एक huge 64 megapixel main lens है, एक 8 megapixel ultra wide lens, एक 2 megapixel macro lens और एक 2 megapixel depth sensor. Since the last few phones Redmi वाले कैमरा के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं, and this phone is the biggest update to camera in Redmi series since forever. The camera in this phone is really fantastic considering the price. The 64 megapixel mode allows you to take very detailed and clear photos
यानी अगर आप फोटोज़ के अंदर जूम करना चाहते हो या फिर अपनी कंपोजिशन को बेहतर करना चाहते हो, यू कैन ईजिली डू दैट विदाउट लूजिंग क्वालिटी, एंड दैट्स अ रियली गुड फीचर। और अल्टरनेटिवली अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करना चाहते हो, यानी कि थोड़ी सी वाइडर फोटोज़ लेना चाहते हो लैंडस्केप को ज़्यादा फिट करने के लिए, या अगर आप ग्रुप के अंदर हो तो इफ़ यू वांट टू फिट मोर पीपल, वो आप वाइड एंगल मोड से कर सकते हो। इसके अलावा द सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो रियली ग्रेट। द पोर्ट्रेट मोड जो है वो इसका काफ़ी ज़बरदस्त है, एंड इट हैज़ वेरी वेरी गुड एज डिटेक्शन। एज यू कैन सी इन दीज फोटोज़ इट लुक्स लाइक दे आर टेकन फ्रॉम a DSLR, एंड आई डोंट थिंक अ नॉर्मल पर्सन इसके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि ये फ़ोन से या SLR से। It also has many other features as well. Redmi's night mode is amazing, and it allows you to take really great photos even in low light. Lastly, there's a 20 megapixel front camera, and even that is really good. It's pretty much perfect for selfies. और portrait mode यहाँ पे भी काफ़ी ज़बरदस्त है. So as you can see, it also takes really amazing photos. Whether it's taking photos of landscapes जहाँ पे आपको clarity चाहिए और आपको sharpness चाहिए, या फिर if it's टेकिंग वाइड एंगल फोटोज़ या फिर मैक्रो फोटोज़ और इवन पोर्ट्रेट्स, आप इसके साथ इजीली कर सकते हो। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड कैमरा फ़ोन, आई से यू वुड बी प्रीटी डार्न हैप्पी विद दिस फ़ोन। In terms of display, there is a 6.53 inches 1080p LCD panel और इसकी maximum brightness 500 nits है, and it also supports HDR. I usually prefer AMOLED displays, लेकिन दिस फ़ोन क्योंकि HDR सपोर्ट करता है, द कलर्स ऑन दिस फ़ोन लुक रियली ग्रेट। इट्स अ ग्रेट क्वालिटी डिस्प्ले, और इसके अंदर कोई लेटेंसी इश्यूज़ नहीं है लाइक द Realme 5 Pro। मेरी डिस्प्ले के साथ कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। इट्स बिग, इट्स हाई क्वालिटी, द रेजोल्यूशन इज़ ग्रेट, सो देयर इज़ प्लेंटी ऑफ क्लैरिटी, और मूवीज़ के लिए या टीवीज़ के लिए या फ़ोटोज़ देखने के लिए इट्स प्रीटी मच परफेक्ट। फॉर ऑल इंटेंसिव पर्पसेस दिस इज़ अ ग्रेट डिस्प्ले एंड आई एम हैप्पी विद इट। इस फ़ोन के अंदर एक 4500 mAh बैटरी है और इसकी बैटरी लाइफ फैंटास्टिक है। आई यूज़ द फ़ोन फॉर 3 days विदाउट चार्जिंग ऑन लो यूसेज, और नॉर्मल यूसेज के ऊपर यू कैन गेट 2 days ऑफ बैटरी लाइफ, एंड दैट्स फैंटास्टिक। एंड इवन आफ्टर दैट ह्यूज बैटरी लाइफ, इसके अंदर 18 watt क्विक चार्जिंग है, सो ऑल यू नीड इज़ अ 50-minute चार्ज एंड देन यूर गुड अगेन। ओवरऑल आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद द फ़ोन। कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ द फ़ोन, इट्स अनरियल हाउ गुड द परफॉर्मेंस इज़, और इसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी है और इसका कैमरा कितना अच्छा है। इट लिटरली टिक्स ऑल द बॉक्सेस फॉर मी, और आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डिवाइसेस ऑफ द ईयर। आई एम गोना गिव दिस फोन अ ग्लोइंग रिकमेंडेशन। दिस इज़ द बेस्ट फोन यू कैन गेट एट द लीस्ट प्राइस, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर यू आर गोना बी हैप्पी विद दिस फोन। So thank you for watching. Please subscribe to my channel, and I'll see you in the next one. Peace.